So I guess it's being started as a hockey umpire was in Gisborne, and being from quite a small place, Povey Bay, we sort of stopped age group stuff at under 15, under 18 level, but I really enjoyed the process of going to hockey tournaments and being connected with the game. So I took up umpiring as a way to stay connected, and really enjoyed it. I got to go to a under 13 tournament Hatch Cup, which was pretty awesome. And then I guess I just stayed in it, was a part of the pathway there with Hockey New Zealand, and learned pretty early on that you could sort of take your umpiring places, which was really exciting. And so in 2010, I was fortunate to be appointed to a tournament in Brazil, where I got my international badge, and yeah, it just sort of took off from there, I guess. There was a few tournaments that I got appointed to, which was really awesome, and I had a really good time. I learnt lots, and yeah, just took on the feedback that was given to me and just tried to do my best, I guess. So yeah, that's how it started. Yeah, it's been a tough journey, if I'm really honest. I come from a really small place called Povey Bay. So we got a hockey turf back in 2015. So I was appointed to the 2016 Olympic Games umpiring on grass turf, or grass, I guess. And yeah, a lot of people always said, you know, that to make it anywhere in our sport or in our region, we had to go out of our region, and you had to go to the bigger cities and sort of centralise, I guess, with the high performance areas. And I don't know, I've always been a believer that's not the case. It's hard work that's going to get you where you want to go, and so that was a bit of a barrier that I needed to overcome, was the location of where I was, and the stigma, I guess, that was associated to being from a really small region. And so yeah, it was hard work, and it was a lot of support from my family and from my community. I guess there's a Māori whakatauki, e hari take toi te tō takitahi, e ngari te tō takitini. So essentially my success is not that of my own, but it's that of the collective, and I wholeheartedly believe in that. So it's not just myself that is, I guess, reaping the benefits of all the hard work, but it's also a reflection on my family and my community, and you know, the people that really believed in me, you know, right from the start. I guess being a young kid from Gisborne and saying, oh, you know, I'm going to be a hockey umpire. You know, lots of people want to be a player, but they don't, I guess, aspire to go down the alternative pathway of an umpire or a coach or a tech official. And so to go down that pathway and, I guess, to be somewhat successful at it is, I guess, really humbling, because it's really honoured to be involved in our game, and to be able to participate and to continue to contribute is, yeah, it's pretty special and really humbling at the same time. I mean, you can't go past the family, right? So my parents, my siblings, my partner Craig, I guess they've been there right from the start and have really supported me and made sure that I stayed grounded and I remember my roots, I guess. So they've definitely been at the top. Craig Gribble from Hockey New Zealand, who I guess shoulder tapped me and said, you know, give this a go and stick with it. He's been a massive influence in my career, and I really owe it to him. He had feedback from me. He sort of gave me the hard truths when I needed it, but also was a huge supporter. So I really appreciate what he did. But also just the hockey community in New Zealand in general have had a massive impact on me. It's a real, like I said, honour to be a part of a hockey tournament. But I guess the hockey is just the means or the tool that we have to, I guess, connect with people and do what we do. And I think that without the people that are involved in the support that we have, it would be a tough role to have. And so I definitely am thankful for the people that have been involved. Yeah, I guess the other one would be a good friend of mine, Jo Cumming, as well. She's been a massive support. You know, she rides the highs with me and she rides the lows as well. So yeah, I've definitely got her to thank for it as well. I think it's given me the opportunity to be exposed to so many different cultures. Going all over the world, you're really lucky to be able to connect with the communities that you go to and spend time there, get to know different people. But also you learn the skill set to be able to integrate yourself into those environments.
you learn to be flexible and go with the flow. It's never easy, in particular being all the way over the other side of the world in New Zealand. It's a long way no matter where you're going, and so you've just got to learn to go with the flow and be flexible and, I guess, adapt as need be. But I also think that I've learned quite a few skills from travelling and from being in the hockey environment that I can transfer into my own profession as well. I'm a campus principal for One School Global Gisborne, and I think lots of the skills that I've learned as a hockey official is really helping me with that role as well. I guess for me, I just enjoy hockey, and I've always thought that it was a really honour to be on the field and to share the field with everyone involved. And so I guess my approach is just to enjoy it, and to be relaxed in what you're doing, and to make sure that you are engaging with it. I prefer to facilitate the game, I guess, as opposed to lay down the law, as you said. But also there's a time and a place that you need to roll up your sleeves and get stuck in, and so I'm definitely not afraid to do that as well. So yeah, I don't know if I guess I was to say my style. I guess it's a little bit laid back, that has a good time on the field, but also knows when it's time to get stuck in and get the job done, I guess. Pues la verdad que fue un cambio muy rápido el de dejar de ser jugadora y pasar a ser líder de un evento como fue la Copa del Mundo. Pero la verdad que tanto en lo personal, lo profesional lo viví como muy personal. Me lo tomé como un reto para salir de mi zona de confort y lo más natural que pudiese para disfrutar cada momento. Y en realidad creo que al afrontarlo así, me hizo vivir cada instante que pasé de la Copa del Mundo, en vez de pensar un poco en el estrés que me suponía, al tener un equipo tan bueno me pareció como lo disfruté. Así que en lo personal y profesional fue una experiencia inolvidable que me aportó el conocer muchas personas del mundo del hockey que no había tenido la oportunidad de conocer antes, y también aprender de un cargo tan importante como es ser directora, ¿no? de un torneo así. Bueno, creo que el deporte, y el deporte de élite en concreto, te da unos valores como persona, y también a nivel profesional saqué muchas cosas positivas del deporte, ¿no? El saber gestionar el estrés, el pensar en positivo, el trabajar en equipo. Todo eso me ayudó a tener unos valores de transición entre la carrera deportiva y la profesional, que a día de hoy sigo agradeciendo al hockey, porque creo que no sé, que te da unas capacidades de afrontar problemas y etapas de la vida que no hubiese pensado a lo mejor antes que llegarían a este punto, ¿no? Entre ellos, te diría el mantener la calma en momentos de estrés, como he dicho, el querer salir de tu zona de confort siempre sabiendo hasta qué límite puedes llegar, y ser valiente al afrontar cualquier situación. Pues es una pregunta muy interesante, porque creo que desde que era pequeña siempre creo que es difícil encontrar unos referentes femeninos, y no sé si es por el tipo de cómo comunicamos el deporte o qué, pero me acuerdo que yo era como un niño cuando era pequeña, y creo que inconscientemente era porque no veía un referente femenino. Y esto es un cambio que sí que veo actualmente, y desde pequeña siempre pensé que si algún día llegaba a ser
deportista referente, me gustaría focalizarme en que todas esas niñas en las que yo veo la Berta de cuando era pequeña, que tengan un referente de trabajo, de sacrificio y siempre con alegría, ¿no? De ver que es posible hacer deporte y hacerlo deporte de élite siempre con una sonrisa y no sé, y sacando lo más positivo de cada cosa que haces, ¿no? Y a ver, también debo decir que el sacrificio es mucho, pero también he tenido suerte de poder vivir lo que he vivido. Pero en todo caso siempre he intentado mostrar que con trabajo, sacrificio y una mente positiva creo que puedes llegar en las metas que te fijes, vamos. Les diría que en la vida hay muchos pilares. Uno es el deporte, pero hay muchos más. Tienes la familia, tienes los amigos, tienes tu profesión. Y creo que nunca balancear todo en un pilar, sino para mantener este equilibrio y siempre tener donde apoyarte, ¿no? Creo que a mí me ayudó un montón tener los otros pilares que siempre sumaban, es decir, los amigos, la familia, el trabajo, mi pareja. Entonces, cuando todos estos pilares suman, sabes que aunque uno se vaya, los otros te van a aguantar el peso de tu alma, ¿no? Y bueno, y esto es básico. También que disfruten de cada momento, que el tiempo pasa muy rápido y entonces cuando miras atrás dices, me hubiese gustado tener menos estrés y más aprovechar del momento, ¿no? Pues que se lo digan cada día, porque es súper importante. Bueno, yo empecé desde los 5 años más o menos jugando hockey, desde bien chiquitita. Mi hermana grande jugaba hockey, así que yo traté de seguir sus pasos, de hacer lo que ella hacía también. Yo tengo un hermano mellizo y él también empezó jugando conmigo al mismo tiempo. Él lo siguió, pero después yo sí seguí por muchos años. Bueno, creo que la Copa del Mundo para todo Chile y para las Diablas en general fue un hito histórico. Para mí en particular, la verdad que me siento muy, muy orgullosa de haber sido parte de ese equipo, de haberlo liderado también, ya que uno pasa a ser parte de la historia del hockey de Chile. O sea, claramente todos fuimos, pero sin duda es algo que hace un cambio en el hockey a nivel nacional. Y creo que sí o sí es una inspiración para todos los niños y niñas del país, para que puedan ver que esos sueños que uno se pone, esas metas a veces parecen inalcanzables, pero que se pueden lograr. Y no importa cuán altas sean, sino que hay que igual intentar ir a buscarlas, sabiendo que se puede fallar, y nosotros fallamos muchas veces antes, pero finalmente el trabajo y el esfuerzo da sus frutos. Yo creo que es algo muy, muy importante para mí y para todo el equipo. Creo que es algo que nos ha distinguido muchísimo a nosotras y nos ha ayudado a ser un mejor equipo adentro de la cancha, tener esa relación muy cercana al final afuera. Y para mí el equipo es como mi segunda familia. Paso a veces más tiempo con ellos que con mi mamá. Entonces realmente son personas con las que yo comparto muchísimo, además que compartimos una pasión y algo que realmente nos une más allá de otras cosas del día a día, sino que nos une esa pasión y esos objetivos que nos ponemos y el querer lucharlos todas juntas. Bueno, a todas las niñas yo creo que les diría que sueñen en grande y que no se pongan ningún techo, que nadie les diga qué es lo que sí pueden y qué es lo que no pueden hacer, solamente uno sabe.
lo que es capaz de hacer y además eso siempre lo subestimamos, seguramente. Estamos para grandes cosas y lo que quieran proponerse, estoy segura que cada una, si pone todo su trabajo y esfuerzo detrás, lo va a poder lograr. Así que ponerse grandes metas para ir en busca de ellas y arriesgarse, tirarse a esa piscina y buscar lograrlas. मेरी जर्नी हॉकी में 2004 से स्टार्ट होती है और बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स आई थिंक उन्होंने डिसीजन लिया था मेरे लिए हॉकी खेलना, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी किसी भी स्पोर्ट के बारे में। और उसके बाद में डेफिनेटली आज यहाँ हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। और जब बाद में पता चला कि ओके नेशनल स्पोर्ट है, क्योंकि उस टाइम मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी तो मुझे इवन इतना भी नहीं ज़्यादा अवेयर नहीं थी स्पोर्ट्स को लेके। तो 2004 में मेरी हॉकी की जर्नी स्टार्ट होती है और 2008 से मैं नेशनल टीम में हूँ। 1.5 ईयर में ट्रेनिंग करती थी एज ए डिफेंडर, बट उतना इंटरेस्ट नहीं था। और देन कोच ने एक दिन पापा को बुलाया और कि उतना मेहनत नहीं करती है, उतना इंटरेस्ट के साथ ट्रेनिंग नहीं करती है और ऐसा तो कुछ फ्यूचर दिखता नहीं है। तो एक पापा को एडवाइस दी थी कोच ने कि इसकी हाइट अच्छी है, अगर ये इंडिया के लिए अगर गोलकीपर बने तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्डिंग बस पापा के लिए ऐसे थी कि ओके इंडिया भी खेल सकती है। तो वहाँ से पापा ने कोच को बोला कि ओके ठीक है, बट कोच ने एक चीज़ बोली थी कि जो गोलकीपिंग किट है वो साल में मेरे पास 2 ही आती है और ऑलरेडी वो 2 किट मैं अपने ग्राउंड पे दे चुका हूँ और अभी जो किट है वो आपको खुद से बाई करनी होगी। तो वो उस टाइम पे 18,000 की किट थी और पापा की शायद उससे भी आधी सैलरी थी। पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया के लिए खेलना है तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनको एक सपना दिखा था कि ओके हो सकता है कि इंडिया के लिए खेले। या बिल्कुल डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट तो होती है कि आपको सबका एक ड्रीम होता है कि वन डे कि मैं कभी इंडिया के लिए अगर मैं नेशनल टीम में हूँ तो कभी कैप्टन बनूँ। बट मैं अपने काम में इतना बिजी थी कि गोलकीपिंग ऑलरेडी आज के टाइम शायद सबको पता होगा कि उतनी आसान जॉब नहीं है, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो मैं अपने इसी काम में बिजी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ठीक है मुझे कैप्टन बनना है। ऑफकोर्स लीडरशिप ग्रुप में हम हमेशा रहते हैं, एज ए सीनियर प्लेयर मेरा जो भी होता है मैं हमेशा टीम से डिमांड करती थी, या जो मेरा काम है मैं खुद टीम के लिए करती थी। बट आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐड हो गई है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी आपको और ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है कि टीम के एक अच्छा माहौल बना के रखने के लिए ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था और उसकी वैल्यू पहले से भी हमें पता थी। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को मिस करते थे कि हमें अगर प्रो लीग खेलने को मिलेगा तो शायद हमारी जो और भी जल्दी हम इम्प्रूव कर सकेंगे। अदरवाइज हमें वेट करना पड़ता था कि मेजर टूर्नामेंट्स आएंगे तब हम टॉप लेवल की टीम के साथ मैच खेलेंगे। बट अभी जब लास्ट ईयर प्रो लीग खेला तो उसका हमने देखा कि प्लेयर्स के अंदर इंडिविजुअल और एज ए टीम हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था कि हाई रैंक टीम के साथ सब रेडी हैं कि हमें खेलना है, क्योंकि वहाँ हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये नहीं है आज के मैच में अगर 1% अच्छा परफॉर्म नहीं रहा है तो कल सेम टीम के साथ है तो एक अलग एनर्जी के साथ जाते हैं। और सभी 8 टीम्स हैं जो सबको पता है कि टॉप टीम्स ही होती हैं। तो उस चीज़ का हमें कॉमनवेल्थ में है और वर्ल्ड कप में है। डेफिनेटली कोई भी बोलेगा कि वर्ल्ड कप में रिजल्ट तो नहीं आया, पर हमें पता है हम एक अच्छी हॉकी खेले थे। रिजल्ट वो नहीं था जो आना चाहिए था, बट हम वहाँ पे हॉकी खेले हैं, हमें उस चीज़ की खुशी थी। और इसीलिए शायद कॉमनवेल्थ में भी उतने साल बाद हमारा मेडल आया। तो वो कहीं ना कहीं प्रो लीग में जो परफॉर्मेंस दी चाहिए, हम अर्जेंटीना के साथ खेले हैं, स्पेन के साथ खेले हैं, सभी टीम्स के साथ, हॉलैंड के साथ खेले थे। तो इसीलिए अब जब नेशन कप में जब हम गए थे हमारे लिए एक यही मोटिवेशन था कि हमें पता है प्रो लीग खेल के हमारी टीम ने कितना इम्प्रूव किया है। तो हमें ये चांस मिला है कि हम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हमें हाथ से नहीं जाने देना है। बस यही था, कोशिश यही थी कि अपना बेस्ट देना है और ये चांस हमें हाथ से जाने नहीं देना है। तो ये हमें क्वालिफाई करना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट ईयर है वो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब हमें अच्छी टीम्स के साथ मैच खेलने को मिलेंगे।
बहुत बहुत ज़्यादा रोल है, शायद सबसे ज़्यादा बड़ा रोल उन्हीं का ही है। उसी की वजह से शायद अभी तक मैं यहाँ पे हूँ, और एक जो फ्रीडम, एक कॉन्फिडेंस जो फील होता है मुझे, वो अपनी फैमिली की वजह से ही होता है। और स्टार्ट मेरे ग्रैंडफादर से होता है, क्योंकि उन्होंने चूज़ किया था कि ओके मैं हॉकी खेल सकती हूँ क्या, तो उनके मुंह से मैंने सुना, और जो कि वो कभी पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए थे, और उन्होंने बोला कि हॉकी खेलना अगर खेलूंगी तो उनको अच्छा लगेगा, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और कि जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल टीम में आई थी तो एक आर्टिकल आया था, और मैं घर गई और सेम मैंने जो पूछा आपने कैसे हॉकी खेलना स्टार्ट किया, तो ये सब मैंने जो अभी आपको बता रही हूँ सेम चीज़ उनको बताई कि दादाजी ने बोला खेल सकती हूँ। देन गोलकीपर बनी पापा जी और कोच की वजह से। तो दादाजी को वो एक खुशी थी कि मेरा कभी नाम की दादाजी का नाम रंजीत सिंह दुनिया है, तो कि मेरा नाम कभी पेपर में आएगा कभी सोचा नहीं था। और मेरी पोती की वजह से पहले से हमारे घर में एक इक्वलिटी है, ये नहीं है कि मैं आज स्पोर्ट्स में हूँ, वो एक कॉन्फिडेंस फील होता है सभी मेरे बहन भाइयों को, जो कजन्स है सबको एक है कि हमारे मम्मी पापा के लिए हम सब बराबर हैं। बट जब स्पोर्ट्स में आई तो वो फर्स्ट आर्टिकल आया था, तो उन्होंने वो पेपर संभाल के रखा कि मेरा नाम पेपर में है, मेरी पोती का नाम है, और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं ये 1 साल बाद बेटा मैं खुद से ये पेपर मैं पढ़ना सीखूंगा, और चाहे स्लो पढ़ूं बट तुझे पढ़ के सुनाऊंगा। और शायद बहुत ही कम लोग यकीन करेंगे, बट उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई मुझे 1 साल के बाद। मेरी कजन की बेटी है, उनसे उन्होंने पढ़ना सीखा, और 1 साल के बाद उन्होंने खुद, वो दिन से मैंने सोच लिया था कि अब मैं हॉकी को पीछे नहीं, जितना जो मुझे अपना करना पड़े लाइफ में अपने हॉकी को या अपनी गेम को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में सबसे खुशी की एक वजह ये है कि मैं हॉकी खेलती हूँ। वो मुझे जो प्राउड से जो एक फील जो दिलाते हैं कि घर में जाना, और मुझे दादाजी जो कि घर के सबसे बड़े मेंबर हैं उनकी खुशी मैं हूँ, तो मुझे अभी इस चीज़ को तो पीछे नहीं छोड़ना है। इंजरीज काफ़ी फेस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो फेस भी ऐसे रहते हैं, जब इंजरी होती है तो आप मेंटली बहुत अपसेट हो जाते हो। उस टाइम पे भी मुझे फैमिली से बहुत मॉरल सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी, मैं अपने आप सबको बोलती हूँ कि अगर किसी को मोटिवेशन कुछ चाहिए तो मेरे पापा से बात करो, वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, बहुत हमेशा यही बोलते हैं कि सिर्फ हमें अपना काम करना चाहिए और बाकी सब भगवान के हाथ में है, रिजल्ट का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें प्राउड फील होता है कि बेटियों को हमारे घर में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए, ताकि चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, अदर फील्ड में है, वो अपना काम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती है। एज ए टीम मुझे ऐसा लगता है 2014 में जब हमारा एशियन गेम में मेडल आया था, वो मेडल हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है आज भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक हमारे जो स्क्वाड का था वो बहुत बड़ा मेडल था कि कभी मतलब जो सब हम एक ही एज ग्रुप के थे, 1-2 हमारे सीनियर थे, तो एक एशियन गेम एशियाड मेडल सुनते थे कि एशियाड मेडल की बहुत वैल्यू होती है। जब वो मेडल आया तो एक वो हमारी जो एक एनर्जी थी वहाँ, एक जो खुशी थी, वो डेफिनेटली बहुत मैटर रखती है हमारे लिए। और 2016 रियो ओलंपिक में मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी इंडिविजुअल, मैं अपने आप को ऐसे मानती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो एक गोलकीपर की होनी चाहिए। वहाँ मुझे बहुत था कि नहीं, गोलकीपर होना मतलब आपको अपनी टीम के लिए कुछ बेस्ट करना है, तभी आज की हॉकी में कुछ हो सकता है। वहाँ से मैंने अपने आप को, मेहनत पहले भी बहुत करती थी, कभी हमारे ऐसा हुआ नहीं है कि कभी कोई लाइट सेशन रहा है, बट मैंने मेंटली भी बहुत काम किया। उसके बाद जो एक फोकस के साथ ट्रेनिंग किया, तो उसके बाद रिसेंटली एक ओलंपिक के बाद ऐसे हो गया था कि शायद मुझे मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे टीम से बाहर कर देंगे और मुझे चांस नहीं मिलेगा, और मैं इस रिग्रेट के साथ रह नहीं पाऊँगी। लाइफ टाइम ऐसा रहेगा कि काश मैं अच्छा खेलती तो ये हो जाता, बट बाय गॉड ग्रेस कि ऐसा नहीं हुआ कि मुझे निकाला या कुछ भी ऐसा हुआ। और उसके बाद में 2017 में एशिया कप था, और वहाँ मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था। हमारा चाइना के साथ फाइनल मैच था। गोलकीपर पोजीशन ऐसी, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं बेस्ट हूँ या मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस से हैप्पी थी कि हाँ, मैंने एटलीस्ट 4 साल में अपने आप को इम्प्रूव किया है और भी बेटर कर सकती हूँ। तो रियो के बाद से और टोक्यो ओलंपिक की जो परफॉर्मेंस थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ से खुश हूँ। और रिसेंटली नेशनल कप हमारे सबके लिए बहुत बड़ा वो था कि हमें क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर हम प्रो लीग खेलते हैं तो नेक्स्ट हम पेरिस ओलंपिक के लिए हमारी परफॉर्मेंस और बेटर होगी, हमें क्वालिफाई भी करना है, देन कहीं ना कहीं हम बेटर टीम के साथ
तो नेशन कप में भी जो परफॉर्मेंस थी, जो मैच था हमारा, जब भी शूट आउट के मैच जब आते हैं ना, मोस्टली ऐसे हो जाता है कि क्योंकि काफ़ी हम सेशंस करते हैं, तो मुझे ऐसे होता है कि बस आज का दिन है, मुझे अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है, बाकी रिजल्ट जो रहेगा हमेशा टीम साथ रहती है, गुड एंड बैड टाइम में ऐसा नहीं है। तो Inside the field of play, I would say that my coach, who coached us during the Junior Hockey World Cup, Tendai Maredza, has always been one of my role models. I think what I have come to, the inspiration that I glean from him is really just, his resilience, especially as a hockey player himself. He has spoken to us, about his journey going, into hockey and making in his rise to being one of the top players in Zimbabwe. And that for me was just, has always been an inspiration that against all odds, he's continued to rise in his career. And I think even taking that onto his coaching role as well, I think that's something for me that I just found really inspirational, like on and off the field, that he's able to use what he's learned in hockey to be able to inspire so many people. And I would say off the field, really, I have always found inspiration from my parents. They have been my role models, I think, because of the resilience that they do possess, and also just the way that they have supported me, even in my career in hockey. I've seen the sacrifices that they have made, and for me, that has always been something that I found so beautiful and something that I have tried to carry in my life to be able to support those around me, those that I love, and those who are in my sphere of influence, to just support and believe in and also make their dreams a reality. So it has been challenging. I think that was the first thing, is just actually acknowledging that it wasn't going to be easy. But what I would say is firstly just what hockey means to me. Really, it's become my place to just release, and a place for me, especially when I play alongside my teammates and other women. It's a place where I feel, seen. I feel like I can just express myself in an unrestricted way. I feel supported. I feel like I'm surrounded by people who believe in me. And so it's the joy that I get from playing. It's the good feeling that I get from going out onto the pitch after a long day at work that really I love, and really is the reason why I make sure that I do, make sure that I'm playing my hockey as well. It does come with its challenges, just trying to balance work life and playing hockey as well. And so I've had to make sure that I communicate well, even with my colleagues from work, so they know that on this day I will have to leave the office early to make sure that I get to practice or get to my matches. But really, I think it's just that constant communication that I have with my colleagues and the support that they offer me has really been so pivotal and vital in helping me be able to play. And I think also just remembering my why of why it is that I enjoy hockey, and really looking at it as, something that I love to do, and that keeps me going back, and just remembering how it is that I feel about it has helped me be able to balance the two. I really do love hockey, and I, after playing the World Cup last year, I was really, even hopeful and seeing what could I do next. But I've had to confront a lot of, personal issues and personal circumstances, which have led me even to now, finding a job rather, not pursuing really my international career. But in terms of hockey, it's something that I will always feel connected to. And if it's not being on the pitch, I do have hopes and desires and dreams of still being part of the hockey community, and be it in different ways, just supporting especially women in hockey, supporting players that are also on the come up back home in Zimbabwe, if it's being a mentor, if it's being a role model, be it supporting initiatives to make sure that players are able to get the financial support they need to be able to go to these different tournaments and competitions. So that is the role really that I feel like I am going to be stepping into. I will still be playing hockey as well at a club level, but as for pursuing it internationally, I think
more so my role will be behind the scenes. Firstly is just remembering why it is that you started. I think that's the most important thing. Your why is always what grounds you, always what keeps you anchored, especially in those moments where you do feel like giving up. I would say just understanding and realizing your potential and really just backing yourself and believing in yourself. There are going to be those difficult moments where you will doubt yourself or where other people will doubt you, and you'll really have only yourself to look into for that motivation and support. And I think also just it's so important that you surround yourself with people who believe in you, people who want to see you succeed. And the other thing is just remembering that hard work really does pay off. I've had moments in my career where I really had to talk to myself and really discipline myself into saying, okay, if you want to see yourself at a certain level, you're going to have to put in the time, you're going to have to put in the hours, and really just coming down to self-belief, believing in what you've done. And especially when you've put in the work, all that's left is for you to go out there and to shine. And I would say just keep believing, keep going after your dreams. Don't be afraid to dream big. And especially as women and as girls, it can be difficult sometimes with different barriers, on our path. But I think really just looking and seeing other women who have done it before and really just saying to yourself, if she's done it, I can do it too. So that's the advice that I would offer.